Hello and welcome to another episode of Mashable Pakistan Lab. In this episode, we have with us the renowned writer Musharraf Ali Farooqi. Thank you, sir, for your time. Thank you, Fatma, for having me. Sir, we'll just dig right into it, which elaborated introductions we हम नहीं करते. So, आपने कब decide किया कि you want to become a writer and make this your profession? Nobody decides. I think very few people decide to make that a profession. I think there is a lot of going back and forth between reading, becoming a dedicated reader, and finding that you enjoy that activity more than anything else. Then after a while, you start getting bored with narratives, and you think maybe I can write better than this. Yeah, what's the big deal? So and I think that leads to slowly gives you the confidence. I think bad books play a very big role in the development of a writer. They say, okay, if this guy can get published, then I can also get published. So I think there's a bit of that as far as confidence is concerned, and also you begin to realize that something is missing in the books that you read, and actually nothing is missing, but some sort of a story is beginning to take shape in your mind, which is close to you, which you would like to explore in the form of a fiction. And so that's how it happened with me. I read a lot of both Urdu and English language classics, and I thought that there are some stories about my childhood, which I would like to see written in the same format or told in the same way. So that was how I first started writing. And of course, when you write your first book, you're not equipped as a writer, because that's your first thing, and you struggle. So it is a lot of that, trial and error. I don't think anybody starts out, except for some very rare people, some geniuses who say, okay, no, first draft and that's it, and let's go and publish this. That's how I think it works for most people. So talking about the fact that you said, one of the biggest motivation for writers in general is that, you find that there's something missing, or you see that, अगर if XYZ is getting published, why not me? आपकी जो latest book है तो वो अंग्रेजी की किताब है, but its storyline, it's very interesting. We will try and not give away the book, but the Merman and the Book of Power जो है, ये एक किस्सा है. And it's in English. So just talk about the fact that, and जो उसकी story है, was I've read the book. It's very, आप कह लें कि हमारे region में या जिस तरह की story telling है, जिसके जो characters हैं, जो आपने उसमें introduce किए, those are something that maybe people in our side of the world, वो किसी ना किसी तरह they can ज़्यादा relate to it, because बचपन में जो कहानियाँ सुना, एक वो oral storytelling का जो culture है हमारे यहाँ, उसमें वो figures in some form जो है वो उस तरह के characters आते हैं. But you have also added, visuals in it. And the best thing about this book, and I've discussed this with a couple of other people who have read that book as well, is कि they were like कि जी जब हम text पढ़ रहे थे, we could visualize exactly the same image, जो फिर हम अगले page पे जाके वो image नजर आता. So just talk about it कि आपने अंग्रेजी में किस्सा लिखने का क्या आपका idea था, and was it for the wider or global audience, या सारा आपका thought process इसका? So qissa is a genre which is it's one of the oldest genres of literature, and novel and all these things are very recent. So if and the people who wrote these qissas and these dastans, there were some of the how would I put it?
most learned, most aware people as far as the possibilities of narrative is concerned. So, yes, there is no overt kind of character development like the kind we see in the novel, and some other things like dialogue and a very clear cut path to the end. But as a genre, qissa is a great vehicle. The dastan is a great vehicle for telling a story. And I thought that I should use some of its techniques in writing a narrative. I won't call it a novel, I call it a qissa that I wanted to tell. And because it had so many different streams, which were, yes, you can say, I can call it a novel, but because it's narrative and all, a novel itself is a extremely powerful form of uh, extremely powerful vehicle, same as a qissa or dastan. And it could have, people would have said, okay, it's a novel, but I wanted to make a point. Okay, this is a qissa and it follows a certain aesthetic in the narrative. And that was the whole point of the thing. And I thought that um, gave it more of a, um, it it helped me visualize it better. Let's put it this way, as a qissa rather than as a novel. Yeah, and I think that was very well communicated to the readers as well, because as I said before, कि जिस जिन्होंने पढ़ा जिनसे बात की, we all had that similar idea that the words and the images, they were pretty much relatable, or visualizations की काफी. It was very interesting. So talking about writing in English and Urdu, आपका दोनों में experience है. You have like a body of work जो translations पे भी dependent है. So just talk about the fact कि because for some people bilingually लिखना दोनों languages में इतना आसान नहीं होता. There are people, and specifically I would say कि जो हमारी generation है, जो नई generation है, they are speaking Urdu, it's fine, but लिखने में we are unfortunately वो इतना हमारा communicate इतनी easy skills नहीं है जितना easily we might be able to do it in English. You do it in both, तो उसका thought process का कुछ bilingual writing में उसका कोई difference होता है, you know practice चाहिए है, या क्या उसके pros and cons आप कह लें कि वो हैं या नहीं है? देखिए, as far as Urdu, writing in Urdu is concerned, I came to that. I mean, when I first started writing, it was in Urdu. I wrote a few things in Urdu, and then I was just reading so many things in English that the when a sentence structure forms in your head, it is in English, or it lends itself Yeah. to expressing expression in English. So, but recently I had to retell some stories for some folk tales for children, and I thought that I would have a hard time writing them because I'd been away from it for so long. I most writing in English, although I was translating from Urdu, both poetry, classics, and even contemporary fiction. But I found out that it was not difficult, it was quite pleasurable, except when you're working with deadlines. It becomes a bit of a, as we are all aware. But Yeah. if I was writing without deadlines, I would have a lot of fun writing in Urdu now. But unfortunately, most of my work related to my children's Storykit project and other things that I'm doing with Urdu curriculum. I'm developing it. They have to do with following very strict deadlines. So the pleasure of it gets sidelined a bit, but I'm sure that with time it will come. So talking about Urdu language, आपसे ये I think पहले भी एक दफा बात हुई थी कि unfortunately जो Urdu literature है, and as you आपने खुद ही mention कर दिया your work with बच्चों का जो literature है, so I would like want to jump into
the children's literature का focus जो आपके काम का एक section है, उर्दू literature पे इतना focus, this is an understanding या maybe it's a misnomer, interesting तरीके से नहीं होता. For example, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, या हम जब स्कूल में थे और जब ये ज्यादा इंग्लिश मीडियम उस पर का फोकस शुरू हुआ, सो वी वर रीडिंग लाइक इंग्लिश फिक्शन ऑन द साइड फॉर एंटरटेनमेंट. बट जो उर्दू का लिटरेचर हमें प्रेजेंट किया जाता था इवन इन स्कूल और आउटसाइड, इट वाज द सेम लिटरेचर जो माय मदर वुड से कि ये हमने भी इसी अपने बचपन में यही पढ़ा हुआ. So to me, now when I think, when I try, matlab, as I said, when I want to read Urdu, yeah, for example, if I want to read Manto, I want to read it in Urdu. I don't want to read it in English. And I Right. remember like LLF का एक event था where Aisha Jalal साहब को भी किसी ने ये question पूछा कि जिन्हें Manto English translation में पाकिस्तानी बच्चे जो नए generation है वो पढ़ती है, and she was like, पाकिस्तानी बच्चे अगर उर्दू में ना पढ़ सकें Manto को, तो that's sort of a shame. So how do you think, where do you think, where was this gap जो develop हुआ कि आप we sort of strayed away from Urdu literature या Urdu literature में interest create करना for our next generations? I think, Fatma, that a number of things went wrong. It's not that people were not writing in Urdu for children. That is not true. I thought so कि भाई लोगों ने बच्चों के लिए उर्दू में लिखना छोड़ दिया था. What went missing were magazines, Urdu magazines for children. और कि पहले जब जिस तरह आप बता रही हैं कि जब आप पढ़ती थी स्कूल में, तो most of the other fiction that you would read was in English, right? When I was in school, which was a long time ago, most of my reading was in Urdu. कहानियों, किताबें, digest, or even translations from English and other languages into Urdu. तो एक तो उनकी wide availability, the distribution of books in Pakistan, that's a huge issue. और दूसरी बात है कि अच्छा बच्चों का कोई मैगजीन, उसका प्लेटफॉर्म जो होता है, that changes so many things, because that provides a platform to writers to submit on a regular basis. It encourages other कि भाई ठीक है ये मैगजीन निकल रहा है, हम भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या उनको कोई राइटर का पता है जो लिखता है, उसको पता नहीं कहाँ पे भेजनी चीज़ कि भाई तुम उधर उस मैगजीन में भेज दो. Urdu has some of world's finest literature for children, which is not known today. ये सारा मैगजीन्स के अंदर छपता था, और जो हमारे सारे अच्छे लिखने वाले थे वो लिखते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, किसी ने नाम नहीं सुना होगा आज, they used to be published there, and I was very fortunate to come across a lot of this material which I licensed from the authors and their publishers, which is absolutely frustrating. You can put it in comparison with world literature being written for children today, and you would not be able to tell the difference. It would not look dated. As you mentioned, when you show the stuff that is being provided in school in the name of Urdu, content, your mother can identify it. कहते भाई ये हमने भी पढ़ा था, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, या वो गाय का रब का शुक्र अदा कर भाई, तो वो अभी तक चला आ रहा है. और this was also my impression until I ran into this huge body of literature published in magazines. We had a lot of this. Publishers are to blame. They would not properly license material. They would not pay authors. I'm not talking about all publishers, but that is generally the rule. I mean, you would just take it. Big publishers in Pakistan, they publish a lot of writers who don't get any royalty for that. Nobody knows how many books are published, how many. So then it's an exploitative relationship between a publisher and a writer, which does not encourage others to contribute. So these are some of the issues. In the absence of a children's magazine,
or the conversion of existing children's magazines into a kind of textbook कि उसके अंदर वो नसीहतें और पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर वो एक शुरू से ही ये बच्चा देखते ही भाग जाए. It's the same as Yeah, कि and स्कूल की टीचर आ गई. and even I also feel कि मतलब even the quality of the paper वो इतना मतलब सबसे downgraded paper आप उर्दू की किताब निकालेंगे तो सबसे downgraded paper पे होगी compared to your other books which are like on a better quality paper. वो एक feel एक ambience जो होती है वो भी unfortunately नहीं है जी, invest होती है. I'm sure that is a consideration for some people. लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात आपको बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे ख्याल नहीं था कि किस कागज पे छपी हुई है. बस वो पढ़ना था और एक बहुत ही एक वॉल्यूमिनस सॉर्ट ऑफ रीडिंग के भाई के अंदर पूरा एक मैगजीन सब रंग डाइजेस्ट या उस टाइप की कोई चीज उठा के पूरा पढ़ लिया कवर टू कवर. तो उसके अंदर आपको परवाह ही नहीं है कि कागज में आपको कागज नजर ही नहीं आ रहा है, आप कहानी के अंदर घुसे हुए हैं. तो आई थिंक not so much as the presentation as the quality of content and its ability to engage children. अगर वो आपको नसीहतें फजीयतें करना शुरू कर देते हैं तो बस फिर आप बच्चा तो वहीं से भाग जाता है. और कोई भी मैं इसमें बच्चों के बिल्कुल साथ हूँ. अगर आपको इस टाइप का कोई बोरिंग चीज लगे तो कोई ड्यूटी नहीं है आपकी पढ़ना, किसी भी जुबान में लिखा हो. It is the responsibility of people who who belong to that language to provide good content for their kids. आपकी जुबान है, आपके बच्चे हैं, क्यों नहीं आप उसके अंदर कोई अच्छी आपसे नहीं लिखा जा रहा कोई अच्छी कहानी तर्जुमा कर लें. that becomes Urdu. Yeah. So these are some of the problems, which is why we there is a disconnect, and distribution is another problem. So आपने स्टोरी किट आपका एक प्रोजेक्ट है which basically focuses on children and storytelling to उसमें and उसके I got to see one of the story kit का पूरा वो package and it was very interesting. There was an associated game with it. So उसका बताएं where the idea came from, उसका क्या procedure है, how can people get involved in that with you. जी, स्टोरीकिट इसकी वेबसाइट है storykit.com और इसकी इसमें आपको थोड़ा सा बच्चों के किस तरह से हैं. हमने चैनल भी शुरू किया हुआ है यूट्यूब पे स्टोरीकिट के नाम से. वहाँ पे ओरल स्टोरी टेलिंग which we started because we could no longer run this school program. So हमारे पास स्टोरी किट में होता है एक डिब्बा होता है, उसके अंदर कहानी है, उसके साथ एक गेम है और उस कहानी का ऑडियो नरेशन है, तो which is provided at a very nominal cost. और उसमें बच्चा हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन का ये करते हैं कि स्कूल में जाके हमारे स्टोरी टेलर्स का ग्रुप है, स्कूल में जाके वो कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद फिर वो उनको बच्चों को किताब दिखाते हैं जो स्टोरी किट में शामिल है, उनको गेम उनके साथ खेलते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह ऑडियो नरेशन किस तरह QR कोड के जरिए आप उसको सुन सकते हैं ऑनलाइन. So that has been very successful. We did a very successful pilot project with the UNESCO Pakistan that was conducted in South Punjab. उसके बहुत ही amazing results आए थे. We are looking at doing some more projects with other organizations. Currently हम इसको 3-4 schools में school systems में run कर रहे थे until the COVID-19 thing. And we will continue to push this program क्योंकि इसमें बच्चों को न सिर्फ कहानी सुनने का मौका मिलता है बल्कि वो कहानी सुनाने में भी शामिल हो जाते हैं. और इस प्रोग्राम का जो यूनेस्को वाला हमारा प्रोग्राम था उसका सबसे बड़ा जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब वो बच्चों कहानी सुनते थे, उसके बाद अपने दोस्तों के सामने आके कहानी सुनाते थे या टुकड़े में सुनाते थे, क्योंकि पूरी कहानी तो हर बच्चा नहीं सुना सकता. तो उधर से लेके उधर तक, उसके बाद वाला आगे दूसरा उसके बच्चा सुना देता था कहानी. तो ये सब चीजें थी एंड दे वर वेरी इनकरेजिंग. सो वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट प्रोग्राम. और अभी हाल में स्टोरी किट का हमने एक और कोरोना क्रंचर के नाम से एक और हमने गेम निकाला है जो बच्चों को हिफाजती तदबीर सिखाता है किस तरह से सेम ओल्ड वॉशिंग हैंड्स, कीपिंग द डिस्टेंस, रिमेनिंग इनडोर्स, वेयरिंग अ मास्क. तो ये चीज़ें हम
इसके थ्रू भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. इसका एक ऑनलाइन गेम भी है. So just to tap into what you just shared, आप जिस तरह आपने बताया कि the way you have like formed जो आपका program है story kit का कि एक story narration होती है और उसके साथ game होती है. Likewise कि जो आपका corona cruncher वाला है इसमें भी है. So are you like is there this ideology somehow कि the gaming is also a form of storytelling? खैर video games के बारे में तो ये कहा जाता ही है. I think I don't remember the name, but one of the major video game creators has said the future of storytelling is gaming and it's not films. So are you like sort of inclined to that part as well? देखिए गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं लेकिन वी यूज गेम्स डिफरेंटली. वी यूज गेम्स टू रीइंफोर्स द आइडिया इन द स्टोरी. तो जिस तरह अगर आपने पोदने पोदनी की कहानी सुनी है तो उसके साथ जो गेम है उसमें पोदने साहब निकलते हैं और मुख्तलिफ उनके जो हर्डल्स हैं दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन द गेम. और उसको जब बच्चे खेलते हैं तो उस कहानी का प्लॉट रीइंफोर्स होता है. तो इस तरह हर कहानी, हर स्टोरी किट के अंदर हर कहानी के साथ उसका एक अपना इंडिविजुअल गेम है जो उस कहानी के प्लॉट को एड्रेस करता है और सम कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्लॉट और उसको तो ये कहानी को रीइंफोर्स करता है. ये इट डज यस इट्स अ कंप्लीट गेम. आप उसको कहानी पढ़े बगैर भी खेल सकते हैं लेकिन अगर आप कहानी पढ़ चुके हैं तो आपको जारी बात है ज़्यादा मजा आएगा, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होगा. बट दीज आर बोर्ड गेम्स विच आर completely independent of the story, but it is not to take away from the story. This is to reinforce the control, the plot and the characters of the story. So because you're involved in like sort of I would say writing के multiple facets जो हैं उनमें आप involved हैं. You have like a component of being involved in publishing as well, and recently I think आपने अपना एक publishing का system भी start किया. Before we dig down into all the publishing industry के issues in Pakistan, I would like to touch upon आपने एक project शुरू किया था some time back, which was of an Urdu thesaurus. जिसमें एक डिजिटल उर्दू thesaurus, something that एक हमें तो वो याद है सबके घरों में. आई थिंक वो एक स्टैंडर्ड उर्दू thesaurus की किताब पढ़ी हुई होती थी. डिक्शनरीज तो ऑक्सफोर्ड वाली आई थिंक सबने रिडंडेंट कर दी थी once गूगल केम आउट, बट उर्दू के लिए भी people still used to have that hard copy. So just share how that project came about and उसका is it still ongoing and उसमें क्या उसका result क्या है. Have people like really because as far as I'm concerned I think it's a very underrated project. So just थोड़ा सा आप लोग उस पे बात करें. जी, Urdu Thesaurus is ongoing. We have the free app for Android, only for Android at this point. और उसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है fully searchable, urduthesaurus.com. They're both operational, and they are regularly accessed in over 100 countries across the world. तो उससे आपको सिर्फ उर्दू की या उर्दू बोलने वालों की या जो लोग उर्दू को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स थिसॉरस एक्सेस कर रहा है ऑनलाइन और लफ्ज़ों के सिनोनिम्स ढूंढ रहा है तो वो हो सकता है कोई तफरीन एक आध ऐसा शख्स हो जो तफरीन करता हो, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो उर्दू लिख रहे हैं या उनको कोई लफ्ज़ या हो सकता है शायरी कर रहे हो और उनको कोई लफ्ज़ उसके माने ढूंढने में उसका उनका इस्तेमाल होता है. So this is a very big number, over 100 countries in the world, people accessing it on a regular basis, using the app. लेकिन इस project, it's a very complex project. We have not been able to roll out the full thesaurus. What you see online, which is still very significant and powerful, is 40% of the total content that we already have. Before we put the rest of the content, it needs a few levels of editorial rounds before we so it's still in the beta phase. We have not moved it out of the beta phase because of that reason कि
कि a language resource has to be accurate, and so we give that disclaimer that what you see here may not be the full resource. There may be other things which you are not seeing. तो उसको complete करना है. We have done a lot of work on that. The work has continued regardless. लेकिन उसके there are some financial constraints in putting the whole thing online because we have yet to finish the editorial rounds. So, moving on to the publishing, a big component of being a writer, and obviously sort of a bridge hota hai between a writer and the reader. Pakistan में publishing industry के flaws या उसकी जो I think missing factors हैं बहुत ज़्यादा highlight. I think जो लोग ज़्यादा into the industry या related to the industry उनको तो शायद शुरू से ही पता होंगे, but for general public, it was a big I think highlight when the import ban लगा अभी recently, specifically with India के साथ जब relations हमारे political relations problematic हुए तो import ban लग गया. We still don't, a lot of latest books जो हैं जो global renowned authors के, we still don't get them. Even a lot of Pakistani authors का I know कि उनकी जो books जो already Penguin India या इस तरह कहीं से publish हो रही थी वो delay हो गई. They were published everywhere else in the world, but Pakistan में वो किताब जो है वो नहीं थी because A import नहीं हो रही थी and B locally publishing का कोई scenario ही नहीं था. So what's your take on it? मतलब it's said कि every कभी जब भी कोई problem या इस तरह की कोई आती है, it also presents an opportunity. So do you think the publishing industry in Pakistan has seen this as an opportunity and कुछ they become active in thinking कि हम इसको tap in करें and why not develop something in Pakistan instead of depending on others? देखिए we look at the English language publications and say कि अरे भाई अब तो किताबें आना बंद हो गई, अब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी पढ़ने में. But that is a very small number in the total picture. Urdu books, both fiction, non-fiction, and a lot of other subjects, are selling in huge numbers. Publishers are making a lot of money in Urdu. You don't have to take my word for it. You can look at the paper import numbers. उससे आपको पता चल जाएगा कितना कागज इस्तेमाल हो रहा है, प्रिंटिंग कागज किस चीज में जा रहा है, तो किताबों में जा रहा है. और पब्लिशर्स देखिए कोई भी किताब पब्लिश होने के अंदर आपको एक डिजाइन करना है किताब को, उसको प्रिंटर को देना है और पब्लिश प्रिंट हो जाती है. उसके बाद फिर पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. इन पाकिस्तान there are very few publishers who would acquire a book, edit it, design it, run it through the editorial rounds, give it for printing, market it, distribute it. It is not an easy job. It's one of the most complex operations it's a complex industrial operation. लेकिन ये छोटी टीम से भी हो सकता है if you have enough resources. In Pakistan, we have some very big booksellers who also happen to be publishers. They're not interested in investing in their thing. That mentality has not changed. अच्छा भाई बिक गई, अच्छा है तो बड़ा मजा आया, इतनी लाइब्रेरीज को हमने बेच दिया, इतनी किताबें कॉपीज निकल गई. The structural thinking that is needed and the kind of wider view of things is absent because they are comfortable. उनका उतना ही है कि भाई ठीक है, साल के अंदर अगर इतने पैसे मिल गए तो बस देख पक जाएगी. So that is the kind of mentality, unfortunately. But I'm sure that there will be other players in the coming days, maybe small presses
A few are being set up by individuals with a lot of effort, with a lot of care. Or hopefully they will attract investment, uh, and they'll be able to put together a kind of operation that can be expanded and improved upon, and it will not be hidebound like most uh, publishing operations in Pakistan currently are. So just to ask one question जो थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है बिकॉज आपने जैसे बताया कि या जो इंग्लिश बुक्स का इंपोर्ट बैन है ऑब्वियसली इंग्लिश रीडर्स पाकिस्तान में अगर आप नंबर्स कंपेयर करें तो मे भी इतने ज़्यादा नहीं है बट फॉर एग्जांपल जस्ट टॉकिंग अबाउट that specific segment. International जो publishers हैं कुछ वो जो if we talk about very big publishers उन्होंने not just country wise they have like given उनके rights होते हैं I think I was reading somewhere region wise होते हैं so जी for जी example so India for example India because it's a big player in that market उनका business oriented वैसे भी हमसे ज़्यादा ही है so they have this these the right of the region so, for example, in the current scenario, जब नहीं हम import कर सकते, तो how do if some author, Pakistani authors writing in English, जिनके books के rights बाकी बाहर वालों के पास हैं, if they want कि जी कोई locally, for example, अगर कोई publisher कहता है कि हाँ जी हम locally पाकिस्तान में इसको publish कर देते हैं, if we have rights, so how does that procedure go? उसकी legalities क्या होती हैं? Is it like a big issue? Yeah, it's still a gentleman's game कि आप उनसे कुछ it's no request no no करके no, it's a business. It's not a big issue. You write to the publisher who owns the rights for Pakistan territory. Most of the time ये होता है कि अगर आपकी जिसने भी अगर आपने खुद अपने सेल्स नेगोशिएट की अपनी किताब की टू अ पब्लिशर और इफ इट हैज गॉन थ्रू एन एजेंट they usually lump together the South Asian rights as one, जिसके अंदर ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान होता है बल्कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं, सारे ममालिक उसमें शामिल होते हैं. तो बट इट्स नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. अगर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि किसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि उसकी किताबें यहाँ पे नहीं मिल रही और उसको क्या मसला है कि व्हाई कांट यू नो दैट पर्सन राइट टू द पब्लिशर आस्क फॉर the right or the license to print the book in Pakistan, because all publishers are very reasonable. They understand कि भाई ये problem है, and nobody wants to lose a writer. पर आई थिंक कि भाई आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहां पे अगर आपकी रीडरशिप है तो नो you see the okay image is back. आप पाकिस्तान का मुझे लाइसेंस दे दें प्रिंट करने का और उसकी कोई मामूली सी फीस होती है आप उसको दे दें एंड देन यू गेट द बुक प्रिंटेड इन पाकिस्तान एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. नो बिग डील. ये सब रोना धोना जो मचा हुआ होता है दिस इज ऑल नॉनसेंस. दिस इज जस्ट लेजीनेस और कोई वजह नहीं है इसकी. So I think that I'm not willing to take them seriously because that's just nonsense. So recently, I got to know a few kids, basically teenagers, who have written fiction stories and very good fiction stories. There's this girl from Sialkot. I think she's 15 or 17 years old, and she has published a novel which is about tackling the issue of mental health. Um, and usne bhi because and then there are a couple of other people we know who ended up getting their books self-published because bache they were very excited, they wanted to do it, so obviously the parents got involved in XYZ जिस तरह भी उन्होंने किया. And that made me realize that this is a segment that unfortunately abhi tak it's being ignored. Because जिन जिन भी बच्चों से मेरा interaction हुआ था they were like you know they had to like go through you know self learning का process. There was they sort of ended up reinventing the wheel कि खुद ही जाके वो प्रेस पे करके एंड पे कुछ समझ नहीं आई तो Amazon समझ आई तो Amazon के साथ डील करके उनकी जो वो Amazon का जो whatever publishing deal है
individual booksellers के साथ वो उन्होंने करके वो कर ली. So for these kids, मतलब locally, how any way sort of a guideline के where they should go for local publications, because these are first time authors, they are not established authors, या उनको नहीं पता कि उन्होंने किस publishers को कैसे reach out किए. They got in touch with me as well by just putting out random emails to any publication जो भी उनको समझ आया. So any guidelines for them कि where any spot where they can कि ये एक ऐसा publisher आपको पता हो कि they are willing to sort of look into this budding talent. देखिए, publishing is an investment. So it's the publisher's call कि वो किस चीज को पसंद करता है, publish करना चाहता है, नहीं चाहता है. लेकिन that does not stop a person from printing their own work. और ये तो अब पिछले कोई 60-70 साल से ये सब 80 साल से ये चल रहा है मॉडर्न प्रिंटिंग का. जो उससे पहले सब लोग अपनी एक तरह की सेल्फ पब्लिशिंग ही होती थी. एंड देन इट यू वुड हैव योर उर्दू के अंदर ज़्यादातर अभी तक सेल्फ पब्लिशिंग होती है. द ऑथर हिमसेल्फ वुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. इब्न सफ़ी साहब जो थे वो अपने घर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे अक्रॉस द कंट्री. in the last जो बच्चों के राइटर थे इश्तियाक अहमद, उनका भी यही था. अपना वो था घर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका. तो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. लेकिन मैं ये करता हूँ आपको कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई प्रिंट करवाना है, क्या करें, किस तरह करना है. तो आई एम गोइंग टू सेंड यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि अगर पाकिस्तान में आपको प्रिंट पब्लिशर बनना है, या आपको अगर अपनी किताब एक किताब भी प्रिंट करनी है, एक या ज़्यादा कॉपीज में, तो उसका क्या तरीका होता है. अगर इफ़ यू वांट टू गो इट द स्टैंडर्ड रूट, वरना तो आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ छपवा सकते हैं. उस पर यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम, किसने पब्लिश की है, किस प्रेस से पब्लिश हुई है, विच इज़ पार्ट ऑफ द लॉ इन पाकिस्तान दैट एवरी पब्लिकेशन मस्ट हैव द प्रिंटर एंड द पब्लिशर्स एड्रेस. और उसकी और कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर. लेकिन उसका एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि अगर आपको बाकायदा करना है तो ISBN नंबर आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान से ले लीजिए. और किन प्रिंटर्स उर्दू बाजार में भरे पड़े हैं. देन देयर आर बिगर प्रिंटर. हर शहर के अंदर मेजर प्रिंटर्स बैठे हुए हैं. तो हर कोई कर देता है. अच्छी कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड किसी कॉर्पोरेशन है, किसी का ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग इज वाइडली अवेलेबल. एंड द पॉसिबिलिटी टू प्रिंट योर बुक, पब्लिश योर बुक इज ओपन टू ऑल. तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है. That's very good actually. जब आप शेयर करेंगे, we can maybe do a write up on Mashable for it, ताकि sort of a guide उस पे हम करेंगे. So let's move on to some questions from social media. And एक बड़ा interesting question है. I'm gonna try and sort of compress it because it was very long. जैसे हमने बात की ना, एक जैसे जनरली भी कहते हैं कि आपने अगर जो लिखना है, you best communicate in your mother tongue, whatever it is. मतलब जिसमें आपका thought process आपका generate होता है. So someone asked कि how do publishers, if you जो globally जैसे बहुत सारी books हमें पता है जो translated होती हैं English की, for example Turkish language, yes, whatever किसी और भी language में. So how, if you are somebody who writes in your local language, how can you approach a publisher and present your work when you don't have a translation ready at hand or have a resource? Do they even bother checking it out? ये इंटरेस्टिंग सवाल है. इसकी वजह ये है कि बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं. आई मीन इफ़ यू आर फर्स्ट कीजिए आप उर्दू में लिख रहे हैं, या सिंधी में लिख रहे हैं, या पश्तो में लिख रहे हैं, तो आपकी किताब किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. अब उसको बाहर किस तरह पब्लिश करवाया जाए, या ट्रांसलेशन में किस तरह पब्लिश करवाया जाए, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द पब्लिशर. या अगर आप खुद अपनी किताब आपने पब्लिश की है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, यू कैन स्टिल अप्रोच इंटरनेशनल पब्लिशर्स
or acquire an agent, write to them. It takes a lot of communications back and forth. इस तरह नहीं होता कि आप फोन उठा के कहें कि भाई मेरी किताब तैयार है, उसका तर्जुमा छाप दो और वो कहे हाँ जी बिल्कुल भेज दें और वो छप जाएगी. इस तरह कोई चीज़ नहीं होती. इट्स अ पेन टेकिंग प्रोसेस, लेकिन इट इज़ पॉसिबल. आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना केस कि दिस इज द बुक, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द content of the book, these are the kind of reviews, and of course you have to communicate all of that in English. Yeah, find somebody who can do that, because unless they know your language, they would not know what the content is. Then maybe a few sample chapters translated into English to accompany the presentation. तो ये सब चीज़ें हैं. अगर हमारे यहाँ अच्छी पब्लिशिंग इंडस्ट्री हो तो पब्लिशर के पास ये सारी चीज़ें होती हैं. दे कैन अक्वायर राइट्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ पब्लिशर और आपने कोई किताब लिखी है, मैं कहूँगा भाई फातिमा आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आई थिंक दैट इट विल हैव अ गुड सेल्स पोटेंशियल outside Pakistan as well. It has the kind of story which could appeal to anyone. तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि नॉट ओनली पाकिस्तान राइट्स, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू अक्वायर राइट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड. और उसके अंदर मैं फिर अपने एंड से निगोशिएट करूँगा पब्लिशर से कि भाई ये है और ये बहुत अच्छी कहानी है और इसका मैं आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो दीज आर फ्यू सैम्पल्स, ये किताब की समरी है, ये इसके सैम्पल चैप्टर्स हैं. दिस इज हाउ इट्स डन. एंड लेकिन अगर आपका पब्लिशर ये सब कुछ नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं, या आपका अगर कोई दोस्त है जो इन चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है तो आप उससे करवा लें. These things are doable, लेकिन it takes a lot of effort. वही आपसे भी बात करके पहले भी, आई थिंक it's a whole business industry है unfortunately, जो I think इसमें there's a lot of potential, but उसको किसी तरह marketing जो है we are missing on that front. Moving on to next. I will just add that it is a cultural industry as well as a business industry. It's complex. और इसमें overnight results नहीं आते हैं. आपको एक मैंने for a book that I translated of ज़ालिम सैयद साहब की शायरी, जो उसमें मैंने कोई 40 पब्लिशर्स को लिखा who would publish poetry. और फिर वेस्लियन यूनिवर्सिटी प्रेस, one of the world's top poetry publishers, they accepted. लेकिन it took me 5 years to pursue publishers, and because I believed in poetry and how important it is, and then of course it was seen for what it was by other reviewers. लेकिन just to give you an example, 5 years. And then patience, yes, yes, key component है इसमें. So moving on to next question. I think ये आपको पहले भी बहुत दफा ये सवाल पूछा जा चुका होगा. I think every author gets it. आपका writing process क्या है? राइटिंग प्रोसेस, जब हम पहले नॉवेल के साथ स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से इसकी सर कहाँ पे है इसका और दुम कहाँ है इसकी, तो ये था कि, और चूंकि वैसे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, कुछ नहीं हो नहीं रहा, तो बस ये था कि 250 वर्ड्स अ डे का मैंने मार्क बना रखा था कि अगर 250 लफ्ज दिन में लिख लिया तो समझेंगे भाई पाला मार लिया. तो लेकिन उसके बाद जब when it became a complete part of my work, भाई अब सिर्फ यही काम है और दूसरे काम नहीं है, जो दूसरी जॉब्स थी छोटी मोटी रेस्टोरेंट में इधर उधर, वो अब नहीं करनी है, ये सिर्फ लिखना ही है बैठ के, क्योंकि अब there's a possibility I will have other publishing opportunities. तो फिर then there was no time, no fixed time. और अभी यही है कि अगर मैं सुबह से उठा हुआ हूँ तो कोई ईमेल है जो फॉलो अप करनी है मुझे किसी क्वेरी पे, या कोई ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ उसके लिए कुछ रिसर्च करनी है, या कुछ लिखना है उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द रीडिंग बिकम्स रिसर्च रीडिंग. आपका कोई टाइम नहीं है, आप जब भी आपको वक्त है जो आपने लिख चुका है फिर उसको रिवाइज कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, तो देयर इज अ टाइम कम्स व्हेन
at least for somebody like me, there's no separation between life and work. कुछ लोग हैं, स्टीवन किंग साहब हैं, वो फरमाते हैं कि भाई मैं सुबह को अपना लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सारा दिन मजे करता फिरता हूँ। तो इट्स वेरी लकी कि टू हैव दैट। मैं अगर लिख भी लूँ सुबह को तो फिर दिन भर ख्याल आता रहेगा, अच्छा वो सेंटेंस एक गलत उसमें गलत स्ट्रक्चर हो गया तो उसको इस तरह करना है स्ट्रक्चर। तो वो चीज़ फिर आपके सर पे सवार रहती है, फिर आई एम अनएबल टू फंक्शन प्रॉपरली until that thing is addressed। तो ये चीज़ें हैं, हर आदमी का अपना प्रोसेस होता है। पहले मेरा वो था कि भाई 250 वर्ड्स और बस कैलेंडर पे एक टिक लगा दिया कि आज का काम हो गया, और अब कोई हिसाब नहीं, अब नहीं भी लिखे जाते 250 वर्ड, बट आई नो दैट आई एम वर्किंग और पुशिंग समथिंग। So the next question is very interesting, and I think थोड़ा सा आपने उसको mention भी किया है. Somebody has asked how, like, because I think editing for writers is the most painful task. जब before आप किसी को externally देते हो editing की, जो आपको self editing करनी पड़ती है और या rewrite करना पड़ता है. So what's your take on that? Because it says that the best writers are the ones who, like, very comfortable with rewriting. So how comfortable are you with rewriting? I'm very comfortable। और मैं शुरू में आपका होता है कि जिस तरह जब पहली किताब आपकी पब्लिश होती है तो हर रिव्यू आपके दिल पे लगता है कि अरे भाई ये क्या लिख दिया उसने, और ये तो उसको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या लिखा था, या हाँ देखो ये सही पहचाना है मेरी राइटिंग को। तो वो उस फेज से जब आप निकल आते हैं और उस वक्त आपको ये भी तकलीफ होती है, अरे भाई ये सेंटेंस किस तरह, नहीं ये तो चेंज नहीं हो सकता है, तो इसी तरह जाएगा। तो वो एक फेज होता है जो सब उससे गुजरते हैं। इट्स गुड टू बी ओवर विद इट सून, सूनर रादर देन लेटर। उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको अब भी ये होता है कि जब मेरा कोई एडिटर किसी चीज़ को लिखता है कि नहीं ये जो मेरे ख्याल में बड़ी एक आफाकी जुमला मैंने लिखा होता है, वो निकाल देता है कि ऐसे वो कहानी का कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसको निकाली तो बेहतर है। तो मैं बहुत दिल में बुरा भला कहता हूँ कि देखो भाई इतना अच्छा सेंटेंस था, लेकिन फिर बाद में ख्याल आता है उसको पढ़ के कि हाँ वाकई उसकी वो एक फालतू चीज़ थी। तो बिकॉज यू आर सो इन्वेस्टेड इन द स्टोरी, आपके जहन में एक पूरा उसका खाका बन रहा होता है कि अच्छा इसमें ये इसकी अहमियत है। लेकिन एज अ रीडर जब आपका एडिटर पढ़ रहा होता है तो वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो आई एम फाइन विद इट। अभी दिल पे तो हमेशा चोट लगती है अगर आप कोई महबूब जुमला उसमें से खारिज हो जाए लेकिन यू लिव। So moving on, I think ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, but specifically एक I think कैनेडियन इंडिजिनस लोगों की एक स्टेटमेंट है, sort of स्लोगन के लिए, टैगलाइन के लिए, whatever, कि nothing about us without us. So this idea कि for a very long time our stories were mostly told by outside writers, अंदर से नहीं कुछ communicate हो रहा था, and उसके साथ connected theory ये है कि likewise impression भी for the rest of the world वही था जो उनको फिर पढ़ने को मिल रहा था from that very, अगर आप बहुत specifically कहें तो that specific Western lens, but other lens आप कह लें. But now with Desis writing in English, telling our own stories, it's very, as a reader I would say थोड़ा सा encouraging भी होता है, because now पहले होता था कि जब कोई देसी वर्ड कोई किसी इंग्लिश नॉवल में लोग यूज कर लेते थे, फिर उसके साथ ब्रैकेट में ढेर सारी 2 पैराग्राफ्स की sort of एक वर्ड को एक्सप्लेन भी कर रहे होते थे. But now there are many incidents या many authors that make it a point. Uzma Aslam Khan is one specific one. She doesn't bother explaining those words. She is like, it's there, go figure it out for yourself. So do you think when our own storytellers telling our own stories and that being exported to the Western world, that sort of helps sort of change the lens in which the world sees us? I think the world should be free to make its opinion of us, just like we are free to make our opinion of the world. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट कि दुनिया हमको किस तरह देख रही है और अच्छे हम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या बुरे लग रहे हैं या दरमियाने लग रहे हैं।
वो एक I think that should not be the concern of literature. आप कहानी सुना रहे हैं, कहानी अच्छी है या फुसफुसी है आपकी, तो बस ठीक है, one way or the other. लेकिन what you mentioned about using local like Urdu language words or Punjabi language words or some other words from one of those languages which we speak in English, there's a standard literary theory about that. मोर देन वन कि हाँ इसको इस्तेमाल करना चाहिए और आप बगैर उसको इवन विदाउट इटैलिक्स आप इस्तेमाल करें. मेरा सिर्फ उसमें सिर्फ ये ख्याल है कि अगर मैं उसको करता हूँ किसी तरह इस्तेमाल, तो उसको आप इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में लिखें इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी कि जो आपका रीडर है उसको समझ में आ जाए कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम द केस. लेकिन अगर आप if you want to take revenge on the reader for some reason, that's perfectly fine too. आपका रीडर है, आप उसके साथ जुल जाए, शेयर करें, उसका भी जाएगा. So this is what I feel, कि no hard and fast rules. Everyone should be free to जिस तरह चाहे लिखें, लेकिन in the interest of the story, because I think the story is more important than the writer's writer himself or herself. The story should make sense ultimately. If it does, without italics, without explanation, fine. If it makes sense with them, fine. Really, there is no compulsion. Communicate होना चाहिए. So from what we can gather is कि वो जो एक notion attached होती है कि from authors and writers पे एक जो एक unnecessary burden है of being the PR representatives of a culture or country. I think that should not be the main job of a writer, because that changes their lens of writing as well, maybe. ये बात किसने फैलाई है वैसे? राइटर्स ने फैलाई है कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी दुनिया के? नहीं, it's नहीं, I don't think writers ने, because आपका एक इंटरव्यू था in one of this book, I think Writers of Pakistan के नाम से था. It was a thesis project of the author, मुझे ज़ेन से नाम निकल गया, and उसमें I think आपका भी इंटरव्यू था, a lot of many देसी writers, and उसमें एक recurring question था, which sort of was कि do you see yourself something like that, कि you have to represent, there's a burden, there's a sort of an answered वो चीजें जो notions attach हो जाती हैं. And a lot of the local writers were actually in the end said कि I write tell a story and I don't carry that burden. So there's I think literary जो community है या जो भी जो वो आपके लिए जो academia में sort of एक वो question mark है कि they have this burden of representation. हाँ, academia से दूर रहना चाहिए writers को अमूमन. That's very good. I will take that advice. Yeah. So next question, I think we talked about children's literature. So एक pointed to going, but एक वो sort of main touching to the root of it कि आपकी motivation क्या थी to focus कि you made it a point कि children's literature पे आपका थोड़ा focus होगा आपके काम के section का. मुझे मजा आता है बच्चों की कहानी है. For the longest time and even now I enjoy reading a good picture book या a novel with pictures. तो अगर आप मुझे 2 किताबें दें, वही किताब हो लेकिन एक के अंदर तस्वीरें हो, hopefully अच्छी बनी हुई हो, और दूसरी बगैर तस्वीरों के, I'll always go for the one with pictures. So it was just that, and that was the motivation to tell a story. Nice. So last question, again one of the standard questions से हम close करेंगे. Your advice for budding writers. Advice तो मेरे पास बेतहाशा है. So one of the biggest thing that I always tell people who ask my advice is do not write in competition with your contemporaries, because they are also struggling same as you. You will not learn anything from writing in competition with them. Maybe you'll write better than them, but that's no measure of success.
if you write in competition with the great masters of literature, कि इनकी तरह मैं लिखना चाहता हूँ, तो then you will always know your place, कि अभी मुझे कितना और सीखना है. क्योंकि अगर आप एक राइटर की तरह लिख भी लें फॉर एग्जांपल, तो you will find 10 other masters whose work can teach you something about exploring stories in your own work, exploring characters in your own work. और वो आपको अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ मुकाबला करके लिखने में चीज़ समझ में नहीं आएगी. तो always go back to the classics, always go back to the classics of your language, read about classics of read classics of other languages in translation if you don't know the main language. Most of them are translated, and you will learn that they are classical literature is almost the same. Some great adventure, some great difficulty to overcome, people falling in love, people dealing with grief, people dealing with loss, and the character that they acquire in the process of negotiating all these challenges and relationships. So this is all I think there is to training as a writer. There is no substitute. हमेशा लोग कहते हैं to reading, and there is none. If you want to read more deeply, start translating some small work from your language into English, or whatever language you write in. उससे आपको एक और जुबान भी सीखने का मौका मिलेगा, लिखने का. और जब आप ठहर के किसी चीज पे काम करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप हो सकता है 100 लफ्ज फी मिनट पढ़ते हो, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आप रुकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, आपको चीज़ ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आएगी. Which was the case with me when I translated from Urdu classes. बहुत सारी चीज़ आपको पता चलती हैं, सीखते हैं. So these are some of the things that I will say: read and translate, and heavily edit your work. Self editing, yeah. I think वो पेशेंस भी सेल्फ एडिटिंग से आप पेशेंस भी आपको सीखने को मिलता है. Thank you for your time. This was really interesting. Hopefully you continue to write, and we will have you back again. आपकी जो भी next book आएगी, we'll have another session with you for that. Zarur. Thank you so much. Thank you so much.